Bismillahirrahmanirrahim. Uh, MIS students, today we'll be starting chapter number 5. Uh, Rather, we started chapter number 5 in the last lecture, and we covered a couple of topics in the part 1 of this lecture. This will be the part 2 of chapter number 5, and today I'll try to cover two topics, or rather, one complete topic and a couple of topics from the second one. So, the topics that I will try to cover today are technology drivers of IT infrastructure. So, these five technology drivers of IT infrastructure will be today in today's lecture. And the second topic, a part of the second topic that I'll cover today is uh, contemporary uh, hardware platforms. Okay, contemporary IT hardware platforms. So, a couple of topics from that topic as well. So let's start with today's lecture. Technology drivers of IT infrastructure. These are the five uh, technological advancements that have led to the evolution of IT infrastructure. Number one is Moore's law and microprocessing power. The second is the law of mass digital storage. The third is Metcalfe's law and network economics. The fourth is declining communication costs and the internet, and the fifth is standard and network effects. So we'll be covering each of these topics one by one. So let's start with the Moore's law and microprocessing power. In 1965, Gordon Moore, the director of Fairchild Semiconductor's Research and Development Laboratories, an early manufacturer of integrated circuits, wrote in Electronics magazine that since the first microprocessor chip was introduced in 1959, the number of components on a chip with the smallest manufacturing cost per component had doubled each year. So, Gordon Moore, this law is named after this Gordon Moore, who was the director of Fairchild Semiconductors Research and Development. Acha, what uh, he did that he conducted a research for the previous uh, he conducted research in which he published uh, his findings of his research ke in the last years, uh, how much advancement was made in this uh, in the processing of the or the microprocessing of the computer chip. So he came up with this finding that since 1959, this this pace of processing has been doubling each year. ठीक है, तो उसने ये उसका ये फाइंडिंग ये थी कि जी हर साल ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इसकी पावर में डबल होती जा रही है. So this assertion that finding of this Gordon Moore became the foundations of Moore's law. Moore later reduced the rate of growth to a doubling every 2 years. ठीक है, तो पहले initially what he found initial finding was that this doubling of microprocessing power was doubling each year, but later on, um, when he added few more years, rather current period as well, so he reduced this rate from being doubling each year to doubling every 2 years. Now, this law would later be interpreted in multiple ways. There are at least three variations of Moore's law, none of which Moore ever stated. ठीक है, तो ये जो गॉर्डन मूर की जो फाइंडिंग थी वो तो यही थी कि जी जो माइक्रो प्रोसेसिंग की पावर है दैट इज डबलिंग एवरी 2 इयर्स. लेटर ऑन जो दूसरे इस फील्ड में काम करने वाले लोग थे उन्होंने इसी चीज से डिफरेंट चीजें मजीद उन्होंने उसको इंटरप्रेट डिफरेंट वे से उसको इंटरप्रेट किया. So these are the three different interpretation. The power of microprocessors double every 18 months. ठीक है, तो based on what Moore found, उसी की basis पे ये चीज दूसरे लोगों ने जो है find out की computing power doubles every 18 months. ठीक है जी, उसी की interpretation. और the price of computing falls by half every 18 months. ठीक है, तो so basically whatever was the finding of the Gordon Moore, ये उसकी इंटरप्रिटेशन है. तीन डिफरेंट तरीके से उसको इंटरप्रेट किया गया. जैसे यहाँ पे बताया गया कि नन ऑफ देम इज व्हाट
uh, none of them was stated by Gordon Moore. Rather, these were the interpretations which are made by other uh, experts who were working in this field. Okay, now let's move to the next slide. Now, exponential growth in the number of transistors. Exponential growth in the number of transistors and the power of processors coupled with an exponential decline in computing cost is likely to continue. गॉर्डन मूर ने तो जो प्रीवियस पीरियड था उसकी रिसर्च की, बट बेस्ड ऑन दैट ही प्रोजेक्टेड फॉर द फ्यूचर एज वेल. उसने फ्यूचर के बारे में भी लोगों ने उसकी बेसिस पे ये उनकी जो ओपिनियन था वो ये था कि दिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ विल कंटिन्यू इन फ्यूचर एज वेल. Chip manufacturers continue to miniature components. Today's transistor should no longer be compared to the size of a human hair, but rather to the size of a virus. ठीक है, तो एक ज़माने में इसको कंप्यूटर जो चिप था उसके ऊपर जो ट्रांजिस्टर्स थे, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी वो दैट वाज़ कंपेयर्ड टू द ह्यूमन हेयर. ठीक है कि जी इतनी थिन है, लेकिन अब उसमें मज़ीद एडवांसमेंट इतनी हो चुकी है कि नाउ इट कैन बी कंपेयर्ड टू साइज़ ऑफ अ वायरस. By using nanotechnology, ठीक है, this is a new technology, chip manufacturers can even shrink the size of transistors down to the width of several atoms. So nanotechnology has further reduced the size of the transistors. Nanotechnology uses individual atoms and molecules to create computer chips and other devices that are thousands of times smaller than current technologies permit. ठीक है, तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है this nanotechnology. Chip manufacturers are trying to develop a manufacturing process that could produce nanotube processors economically. IBM has just started making the microprocessors in a production setting using this technology. So now the computer chip manufacturers are shifting to this technology. उसकी वजह उन्होंने बता दी कि क्यों इस पे शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके ज़रिए से जो है वो आप जो डिवाइसेस बना सकते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स स्मॉलर देन करंट टेक्नोलॉजी है. तो एक बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है जिसकी तरफ जो है माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरर्स जो है शिफ्ट करते चले जा रहे हैं. सो बेसिकली दिस इज वन ऑफ द टेक्नोलॉजी ड्राइवर कि जी जितने आपकी पावर ऑफ कंप्यूटिंग बढ़ती गई तो उसकी वजह से मोर एंड मोर बिजनेसेस फाउंड इट यूजफुल टू यूज द आईटी. उसकी वजह से फिर आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी एवोल्यूशन आता चला गया और नई नई उसकी एप्लीकेशंस डेवलप होना शुरू हो गई, नई उसकी यूजेज आ गई. तो कंप्यूटर्स वर people started thinking of using the computer in the ways which were never thought before. ठीक है, तो ये उसके पीछे एक ड्राइवर जो था वो ये टेक्नोलॉजी का ड्राइवर था विच इज दिस पावर माइक्रो दिस पावर ऑफ प्रोसेसिंग यू कैन से. तो उसकी वजह से इतनी फास्ट पेस से इसके अंदर जो एडवांसमेंट हुई कि जिसकी वजह से जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के ऑपरेशंस थे या वो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस थी वो इसमें आसान हो गई डेवलप करना उनको. उनको जो है those things which were unimaginable before they people achieved those things using this uh, driver of the technology. Okay, now the second technology driver that led to the evolution of IT is the law of mass storage, law of mass digital storage. The amount of digital information is roughly doubling every year. This is the law of mass digital storage. अच्छा, वहां पे जो हमने पहले मूर्स लॉ देखा था उसके अंदर हमने प्रोसेसिंग पावर की बात की थी कि वो डबल हो रही है. तो जो रिसर्चर्स थे उन्होंने जब इसके ऊपर बात की कि भाई इंफॉर्मेशन जो है वो उसकी जो है क्या with what speed this information is increasing and with what speed the cost of that information is increasing. So they found out कि जी the amount of digital information is roughly doubling every year. ये जो digital information आज आपके पास है next year it is going to double. लेकिन fortunately the cost of storing digital information is falling at an exponential rate of 100% a year. ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज हो गई. अगर ये ना होता कि कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती तो फिर इट वुड हैव बिकम इम्पॉसिबल फॉर मेनी बिजनेसेस टू स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन दे हैड. ठीक है, फिर तो ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जी इंफॉर्मेशन आपकी हर साल डबल हो रही है और आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे. तो फिर आइडियली तो फिर बिजनेसेस को गिव अप कर देना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसलिए कि उसकी कॉस्ट भी उसके हिसाब से डिक्लाइन होती चली गई. तो इट बिकेम
manageable for the businesses to store all the information they needed. The number of megabytes that can be stored on magnetic media for $1 from 1950 to the present roughly doubled every 15 months. In 2012, a 500 gigabyte hard drive disk drive sells at retail for about $60. अच्छा अब ये 2012 की बात है. Now we are in 2020. So it might be possible कि जी अगर आप आजकल के हिसाब से I don't have the exact figure, लेकिन अगर आप देख लें तो शायद $60 के अंदर you are getting data in might be 500 terabytes. ठीक है, वही आपको उससे मल्टीपल टाइम्स डाटा, कई गुना ज्यादा डाटा अब आपको उस कॉस्ट में मिल रहा है. ठीक है, तो ये एक दैट इज वन ऑफ द अनदर टेक्नोलॉजी ड्राइवर. ठीक है, जैसे कंपनीज ग्रो होती गई, उनका डाटा ग्रो होता गया, लेकिन बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग कॉस्ट इट बिकेम मैनेजेबल फॉर द कंपनीज कि वो उनके लिए वो डाटा मैनेज करना, उसको स्टोर करना, दैट ऑल्सो बिकेम मैनेजेबल फॉर देम. सो दिस इज द लॉ ऑफ मास डिजिटल स्टोरेज. Now, the third law, which is Metcalfe's law, it is basically related to the network economics. The first two laws, Moore's law and the law of mass storage, help us understand why computing resources are now so readily available. But why do people want more computing and storage power? The economics of networks and the growth of the internet provide some answers. ठीक है, तो इंटरनेट की ग्रोथ की वजह से आपके ये दोनों चीजें they became more important than ever before कि because of the growth or popularity of internet अब आपके पास you need more processing power as well as you need more storage power. तो ये जो नेटवर्क इकोनॉमिक्स का तो कॉन्सेप्ट था वो इसने ये इसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ा दिया. नाउ रॉबर्ट मेटकेल्फ was the inventor of Ethernet local area network technology, claimed in 1970 that the value of or power of a network grows exponentially as a function of the number of network members. अच्छा, अब इसका मेटकल्फ लॉ ये कि जी जैसे जैसे आपके किसी नेटवर्क के अंदर मेंबर बढ़ते चले जाते हैं, उस नेटवर्क की पावर जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो करती चली जाती है. तो उस नेटवर्क की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कि फेसबुक के ऊपर वाई फेसबुक इज कंसिडर्ड, या सोशल मीडिया के और भी जो टूल्स हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल क्यों कंसिडर किए जाते हैं? इसलिए कि उसके ऊपर आपके नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत ज्यादा है. अब आप देखें यूट्यूब के ऊपर यू आर एक्सेसिंग एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना. अब वो यूट्यूब किस तरह से उसको मैनेज कर पा रहा है और वो इतना पावरफुल जो है वो एक मीडियम कैसे बन गया? बिकॉज द नंबर ऑफ मेंबर्स, उसके नंबर यानी इतने ज्यादा लोग उसको एक्सेस करते हैं इंफॉर्मेशन को कि इट बिकेम अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर यूट्यूब. वो एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए से उस पर रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं एंड एज अ रिजल्ट दे आर एबल टू मैनेज सच अ ह्यूज application on the internet. Metcalfe and others point to the increasing returns to scale that network members receive as more and more people join the network. ठीक है, तो जैसे जैसे नेटवर्क के मेंबर ग्रो करते चले जाते हैं तो उसकी अगर कोई कॉस्ट है भी नेटवर्क की तो वो रिड्यूस होती चली जाती है फॉर द मेंबर्स बिकॉज इट इज डिवाइडेड ओवर द larger number of the network members. As the number of members in a network grows linearly, the value of the entire system grows exponentially and continues to grow forever as members increase. Demand for information technology has been driven by the social and business value of digital networks, which rapidly multiply the number of actual and potential links among network members. तो ये जो इसकी आईटी की डिमांड है उसके पीछे ये सोशल एंड बिजनेस जो उसके आपके जो नेटवर्क्स हैं उनकी डिमांड इतनी ज्यादा इसलिए है कि दे आर वेरी पावरफुल मीडियम. अब आप देखें कि आप फेसबुक के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से बिजनेसेस हैव फाउंड इट कि जी दे कैन इंक्रीज टू अ लार्जर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन एट कंपैरेटिवली वेरी लो कॉस्ट. तो बिजनेसेस को भी फायदा है एंड वजह उसकी यही है कि उसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स दैट आर देयर, दे आर ह्यूज नंबर ऑफ नेटवर्क मेंबर्स और उनको एक्सेस करना फिर आसान है उसके जरिए से. एक और एग्जांपल इसकी आप व्हाट्सएप ले सकते हैं कि व्हाट्सएप देखें इज फ्री, आप जो यूज करें आपको फ्री पड़ रहा है, लेकिन व्हाट्सएप हाउ इट इज मैनेजिंग द थिंग्स उसको वो बिकॉज
जितने ज़्यादा लोग उसको यूज़ करेंगे, जितने ज़्यादा लोग उसके मेंबर्स होंगे, तो उसकी जो पावर है, उसकी वैल्यू जो है व्हाट्सएप की, दैट विल ग्रो। और उसकी वैल्यू बढ़ने की वजह से दैट विल अट्रैक्ट other businesses to think and to get benefit from the data that is available on the WhatsApp. Okay, now fourth technology driver is uh, that is transforming IT infrastructure is the rapid decline in the cost of communication and the exponential growth in the size of the internet. ठीक है, ये दोनों चीजें आप देखें साथ साथ चल रही हैं कि आपकी कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो डिक्लाइन होती चली जा रही है, और जो आपकी इंटरनेट की ग्रोथ है, इंटरनेट इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, यानी इंटरनेट की यूजर्स को अगर आप देखें तो उतने ही तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। Now, an estimated of 2.3 billion people worldwide now have internet access, and obviously this data is very old, 2012. 2020, you can expect more than might be 3 or close to 4 billion people would be accessing internet by now. The exponentially declining cost of communication, both over the internet and over telephone networks, which increasingly are based on the internet, as communication cost fall towards a very small number and approach zero, utilization of communication and computing facilities explode. अब आप देखें कि जो कॉस्ट ऑफ योर टेलीकम्युनिकेशन है दैट इज रिड्यूसिंग। पहले आप देखें इंटरनेट की जो आपको स्पीड थी और जो उसमें आपको डाटा की फैसिलिटी थी, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी। ठीक है, अब वो इट इज़ डिक्लाइनिंग वेरी रैपिडली। अब आप ज़्यादा डाटा एक्सेस कर सकते हैं, ज़्यादा डाउनलोड्स आपके पास डाउनलोडिंग कैपेसिटी है और ज़्यादा स्पीड है, उसी कॉस्ट में जिस कॉस्ट में पहले वो आपके लिए आपके पास नहीं थी। तो व्हाई इट इज पॉसिबल, इसलिए पॉसिबल हो गया कि जैसे जैसे इसके आपके पास नेटवर्क के ऊपर बंदे बढ़ते जाएंगे, तो कम्युनिकेशन कॉस्ट विल फॉल एंड इट विल अल्टीमेटली अप्रोच जीरो। जैसे कि आप देखें पीडीसीएल में उन्होंने एक जमाना था कि जब उसकी लैंडलाइन की कोई भी कॉल थी वो दे वर चार्जिंग फॉर दैट, और अब आप अगर देखें तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देयर लैंडलाइन कॉल्स आर फ्री। ठीक है, तो उनका सोर्स ऑफ जनरेशन अब रेवेन्यू जनरेशन जो है वो that is now internet rather than uh, you know that voice or landline numbers. To take advantage of the business value associated with the internet, firms must greatly expand their internet connections, including their wireless connectivity, and greatly expand the power of their client server networks, desktop clients, and mobile computing devices. There is every reason to believe this trend will continue. तो ये एक कंटिन्यू ये ट्रेंड इसलिए हम कहा जा रहा है कि ये कंटिन्यू करेगा, इसलिए कि अब आप देखें कोई भी बिजनेस है वो इंटरनेट के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। आपकी अपनी जो है वेबसाइट्स हैं, आप उसके ऊपर अपने कस्टमर्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने सप्लायर्स के साथ आप उसके थ्रू लिंक्ड हैं, और उसके साथ साथ आप जो अपने बिजनेस के अंदर आपने एक्सेस दी हुई है अपने जितने भी एम्प्लॉयज का वायरलेस कनेक्टिविटीज देयर, और इसी तरह से आप क्लाइंट सर्वर नेटवर्क जो यूज कर रहे हैं, तो उस क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के ऊपर जो है उसकी पावर बढ़ती जा रही है, इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल। और इसके साथ साथ जो है आपके डेस्कटॉप क्लाइंट्स तो है ही हैं शुरू से थे बिजनेसेस के अंदर, लेकिन अब जो शिफ्ट है दैट इज टूवर्ड्स द मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो अब आप देखेंगे आपके जो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो जो सुई गैस का बिल लेने आते हैं, तो उनके पास भी दे हैव दिस मोबाइल डिवाइस थ्रू विच दे जस्ट स्कैन इट। आपका जो मीटर है उसको स्कैन करके, एंड दे डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, रादर दे जस्ट स्कैन इट एंड अपलोड। तो वो जो आपकी बिल की रीडिंग है दैट इज अपलोडेड इन द सर्वर, इन देयर सेंट्रल सर्वर, और वहां से वो आपका बिल जो है वो जनरेट हो जाता है। सो ह्यूमन उसमें जो है इंटरेक्शन वो कम है, और इट इज basically using use of the mobile computing device that they are using there. Okay, the next one is standards and network effects. Today's enterprise infrastructure and internet computing would be impossible, both now and in the future, without agreements among manufacturers and widespread consumer acceptance of technology standards. एक चीज जो हमें नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि जितने भी आपके टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो
वो they are manufacturing all the components or the computer related equipments based on certain standards, ठीक है, and those standards are widely accepted by these manufacturers and they try to follow those standards. Technology standards are specific specifications that establish the compatibility of products and the ability to communicate in a network. ठीक है, तो अब ये बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स हुआ ये कि जो आपके जितने भी आपने चीज़ें बनाई हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, डेस्कटॉप हैं, उसके साथ आपकी जो नेटवर्किंग का इक्विपमेंट है, उसके साथ आपकी जो प्रिंटिंग के इक्विपमेंट्स हैं, तो सारे दे आर कंपैटिबल विद ईच अदर, ठीक है। वो ये प्रॉब्लम नहीं आता कि जी आपने एक कंप्यूटर सिस्टम ले लिया, परचेज कर लिया, अब आप नेटवर्किंग का आपको इश्यूज आ रहे हैं कि जी उसका उस जो नेटवर्किंग वाला जो फैसिलिटी है वो कोई और टेक्नोलॉजी को फॉलो करती है और आपकी डेस्कटॉप टेक्नोलॉजी या आपकी जो कंप्यूटिंग जो टेक्नोलॉजी है वो किसी और स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है, तो आपके पास प्रॉब्लम आ जाएगा ऑफ कम्युनिकेशन। तो ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि बिकॉज ऑफ दीज टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स ये सारी चीजें दे आर कंपेटेबल और आपके लिए इट इज एबल टू कम्युनिकेट इन अ नेटवर्क। Technology standards unleash powerful economies of scale and result in price declines। ठीक है, economies of scale यही होता है कि जब आप लार्ज एक चीज आप 10 यूनिट्स बना रहे हैं तो उसकी कॉस्ट आपको ज्यादा आएगी, लेकिन अगर आप वही 100 यूनिट्स बना रहे हैं और अगर वही चीज आप 1000 यूनिट्स बना रहे हैं तो ऑब्वियसली कॉस्ट पर यूनिट इज गोइंग टू रिड्यूस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो स्टैंडर्ड्स की वजह से ये है कि जी वही आपकी जो सेल ऑफ योर यूनिट्स इट विल इंक्रीज, ठीक है, मोर एंड मोर पीपल विल बी परचेजिंग दैट, तो उसकी वजह से आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी और कॉस्ट कम होने की वजह से आपकी प्राइस डिक्रीज हो जाएगी विच बिकम्स मोर अफोर्डेबल फॉर द कस्टमर्स। Without these economies of scale, computing of any sort would be far more expensive than is currently the case। तो ये जो हमें इस वक्त जो हमें चीजें हमें अफोर्डेबल नजर आती हैं उसके पीछे वन ऑफ द रीजन बिहाइंड देम इज दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के वाइडर एप्लीकेशन है, ज्यादा से ज्यादा लार्जर सेगमेंट ऑफ द पीपल आर यूजिंग दोज टेक्नोलॉजीज एंड दैट इज रिजल्टिंग अ लोअर कॉस्ट फॉर द मैन्युफैक्चरर्स एंड दे आर एबल टू offer those products at a cheaper cost। Now let us look at some of the standards that that are being followed in the computing industry। अब आप देखें कि जो आपके जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं दे आर बेस्ड ऑन दिस एस्काई कोड। एस्काई स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। This ASCII made it possible for computer machines from different manufacturers to exchange data, later used as the universal language, linking input and output devices such as keyboards and mice to computers, adopted by the American National Standards Institute in 1963। ठीक है, तो ये एस्काई इज द लैंग्वेज और जिसकी वजह से आपके सारे जो कंप्यूटिंग सिस्टम है वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। चीज़ें जो आपकी हार्डवेयर है और वो आपस में लिंक हो रहा है यूज बिकॉज दे आर following this standard। COBOL basically is a programming language. COBOL stands for Common Business Oriented Language. This is an easy to use software language that greatly expanded the ability of programmers to write business related programs and reduce the cost of software, sponsored by the Defense Department in 1959। ठीक है, तो 1959 के अंदर ये कोबॉल लैंग्वेज जो है ओरिजिनेट हुई और इसके पीछे डेवलपमेंट के पीछे जो मेन रोल था दैट वाज द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ यूएस, but later on it was adopted by the businesses as a standard uh, language for software for their development of their programs। Another standard is Unix। Unix is a powerful multitasking, multi-user, portable operating system, initially developed in Bell Labs 1969 and later released to use by others 1975. It operates on a wide variety of computers from different manufacturers, adopted by Sun, IBM, HP, and others in the 1980s.
it became the most widely used enterprise level operating system. ठीक है, तो यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपके एंटरप्राइज सिस्टम्स के अंदर यूज होता है, जिसको हम जो है वो ईआरपी सिस्टम्स भी बोलते हैं। ईआरपी सिस्टम्स के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर यूज हो रहा है दैट इज यूनिक्स। तो जितने भी लार्ज स्केल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स हैं, एंटरप्राइज लेवल के जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। टीसीपी आईपी TCP is transmission control protocol, IP is internet protocol. We already discussed this in previous lecture. This is a suite of communication protocols and a common addressing scheme that enables millions of computers to connect together in one giant global network, that is the internet. Later, it was used as the default networking protocol suite for local area networks and intranets developed in the early 1970s by the US Department of Defense। ठीक है, तो ये भी बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने आपस में कम्युनिकेट करने के लिए अपने इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन के लिए डेवलप किया था, लेकिन लेटर ऑन इट वाज अडॉप्टेड एज अ स्टैंडर्ड फॉर द इंटरनेट। तो अब इंटरनेट की जितनी भी कम्युनिकेशन है दैट इज carried out using this protocol, TCP IP protocol। Ethernet, another standard. It is a network standard for connecting desktop computers into local area network that enabled the widespread adoption of client server computing and local area networks and further stimulated the adoption of personal computers। ठीक है, तो LAN जो आपकी है लोकल एरिया नेटवर्क दैट इज डेवलप्ड यूजिंग ईथरनेट टेक्नोलॉजी, और ईथरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से आपके जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वो भी पॉपुलर हो गए और आपके डेवलप लोकल एरिया नेटवर्क्स भी इसकी वजह से डेवलप हो गए। IBM, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल प्रोसेस पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम विंटेल कह रहे हैं ना, विंटेल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपके पास इंटेल एज अ प्रोसेसर इज यूज्ड। सो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम and later Windows software, the emergence of this standard low cost product laid the foundation for a 25-year period of explosive growth in computing throughout all organizations around the globe. Today more than 1 billion of uh, PCs power business of government activities every day। ठीक है, तो ये जो एक कॉम्बिनेशन था पर्सनल कंप्यूटर्स विंटेल का जो कॉम्बिनेशन था दैट बिकेम ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो यही यूज़ हो रहा है पॉपुलरली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, बिजनेसेस के अंदर, एंड इवन इन द होम दिस विंटेल combination is used in the desktop technology। Another standard is World Wide Web. Standards for storing, retrieving, formatting, and displaying information as a world wide web of electronic pages, incorporating text, graphics, audio, and video, enables creation of a global repository of billions of web pages। ठीक है, तो जो आपकी वर्ल्ड वाइड वेब की जो टेक्नोलॉजी है जिसे हम 3W भी कहते हैं, तो ये 3W टेक्नोलॉजी जो है ये सारी आपकी वेब पेजेस जितने भी हैं वेबसाइट्स की डेवलपमेंट के अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज होती है। ओके, सो दिस गिव यू एन आइडिया कि जी किस तरह के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डेवलप हो गए और पूरी दुनिया में वो पॉपुलर हो गए, और बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलैरिटी जो डिवाइसेस थी और जो आपके सॉफ्टवेयर थे दे स्टार्टेड फॉलोइंग दोज टेक्नोलॉजीज, दो स्टैंडर्ड्स, और more and more people became accustomed to those standards, adopted those standards। कंपनीज हो गई, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, आईटी डेवलपर्स हो गए, उन्होंने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना शुरू कर दिया, एंड देन अल्टीमेटली इट बिकेम ईजियर फॉर द कंपनीज टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन दोज स्टैंडर्ड्स। लोग उससे फेमिलियर हैं, उसको यूज कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट उसके हिसाब से डेवलप हो रहे हैं। तो दैट इज रिजल्टिंग इन लो कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी जो है उसकी वजह से दैट बिकेम very easy for the businesses and individuals। So here the part one of our today's lecture is complete। That part covered basically the
technology drivers that led to the evolution of IT infrastructure. So you can have pause of 2 to 3 minutes here, and then we'll start the second part of our lecture.